Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible? Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, it's clear, sister. Please. Okay. जी जज़ाकल्लाह खैर। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले चलिए हम दुआ पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। I want all the other students to off your mics. Okay. I hope everyone has completed their work assigned to them yesterday. Is it? Hello? Hello, am I audible? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, it's clear. Sisters के mic off है, आप chat box देख सकते हैं इंशाल्लाह. ओके, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, मैं चैट बॉक्स चेक कर लूँगी। ओके फाइन। सो आपको होमवर्क कब सबमिट करना है ये आपको आज ग्रुप में बता दिया जाएगा या फिर एट द एंड ऑफ द क्लास यू विल बी नोन टू इट। फाइन, लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। फॉर दैट आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन एंड बिफोर दैट लेट्स रिकॉल व्हाटएवर वी हैव गॉन थ्रू यस्टरडे। हम लोगों ने कल क्या सीखा था, जस्ट एक छोटा सा रिकॉल करेंगे। Yesterday we have gone through words and formation of sentences. Sentences has been classified into two main categories that we have seen based upon functions and based upon structure. And apart from that, we have seen the categories of those who are new, don't worry, you will be having a briefing every day. Okay, and at the end of the course, you will be getting the PPT. And whoever is interested to get the PPTs, for that, a nominal charges will be assigned to you that you have to pay, and you will be able to have the PPT for you. Next one, whoever is the new persons here, no worries, you will be having the briefings, and very soon you will be having your assignment leaders also. They will be monitoring your work, and if at all any reviews will be needed, we can be doing with them. Okay, fine, inshallah. Just a minute. No issues, dear, whoever has missed the classes. Okay, you will be getting the updates very soon from your monitors or the team leaders. Okay, for today, you focus on today's class. Whatever you have missed in yesterday's class, for that, you will be having the review at the end of the course or during the course. Fine. Now, let me ask few questions, whoever were present yesterday, for them.
The one who missed it, they will be having a review for it. Okay, we have seen the categories of sentences in terms of functions. Okay, in terms of functions, we have seen there are 4 categories, and that one you're seeing onto your screen. There are 4 kinds of sentences. The first one is declarative, imperative, interrogative, and exclamatory. So these kind of sentences are something which are very simple to understand and frame. To remember you easily, declarative sentences and imperative sentences will be ending with a dot at the end of the sentence, and these are very simple sentence. And whatever you are seeing in the interrogative and exclamatory, you will be having a new symbolic representation there. Interrogative defines the questioning of the sentence, and exclamatory defines the forceful, या फिर what we can say strong feeling or desire which we express in the sentence with an exclamatory mark. The difference between declarative and the imperative is declarative sentence is a simple declaration. This is my book. Okay, the pen is blue in color, and so on. That is a simple sentence. We are declaring it. Okay, so those kind of sentences are your declarative sentences. Imperative, the difference between declarative and imperative sentences, imperative will have a hidden command into it. It will also be a simple sentence only, but with a hidden command inside it, as you can see onto the screen. Clean your room. Okay, people who cannot understand fluently English, if I translate here everything into Urdu, then it won't be meaningful. Okay, you are here to learn English, so make it a habit to understand or grasp. I'm not saying that within a day you will be able to understand each and every term. Okay, बट आपको ये हैबिट बनानी होगी ताकि आप सुनते सुनते आसानी से इंशाल्लाह इन फ्यूचर सीख जाओगे. फाइन. सो मैं जो भी टर्म्स ट्रांसलेट करना चाहूंगी, डेफिनेटली आई विल डू देम, बट from your end also you to try to understand and listen to the words of English carefully. Okay, I hope all the newcomers are also sitting with your notebooks and pens and making the notes. So this is the end of our class. Yesterday we have done, and today let us begin for the another category of sentences based upon structure. So in the chat box, I want the answers for what are the different types of sentences that we have seen with in terms of structure. With respect to structure, what are the 4 categories? Whoever it is, dear, see, if I'll give you all the meanings in Hindi, it won't be a crash course, and then you need to register for an advanced course. Okay. Where I can go line by line everything into translation. Please don't mind whoever it is. आप सीख सकते हो, लेकिन मैं हर चीज अगर उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए बताऊंगी ना, then it will be taking a lot of time and I cannot complete whatever I have planned for the course in this short duration. Very good. So yesterday we have seen the categories of the kind of sentences which are under the category of structure wise. Those are simple, compound, complex, and compound complex. Let us understand them clearly in today's class. Yes. I hope this was the assignment completed by you all. Yeah. So today you will be studying about these type of sentences according to structure. Those are simple sentence,
complex sentence, compound sentence, and together we are forming another type, that is compound and complex sentence. Now, to understand this simple sentence, ये इस तरह का सेंटेंस होगा जो कि बहुत आसान होगा पढ़ने में भी, लिखने में भी, समझने में भी. एक सिंपल सेंटेंस कब कहलाया जाता? जिसमें एक मीनिंग छुपा हो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूजिंग सो मेनी टर्म्स राइट नाउ. Okay, I'm forming so many sentences in my communication to you, right? So when I'm using the term called as the bus is running on the road, what is this? It's a simple sentence giving you some meaning that I'm speaking about the bus, I'm speaking about something traveling on the road, right? So एक आसान सा जो सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, एवरीथिंग इन डिटेलिंग विद द डेफिनेशंस यू विल बी अंडरस्टैंडिंग नाउ. Next, compound sentence. The term compound, meaning of compound is where one thing is attached with another thing. Means a sentence, along with that simple sentence, another sentence has been attached together. Compounding. To give the idea or the logic behind this compounding, let me give you a real-time example to you. I hope many of you have seen the capsule. Okay, आप लोगों ने कैप्सूल देखा होगा या फिर कभी उसे ओपन करके भी देखे होंगे. When you have opened it, yes, can you give me the responses in the chat box? Have you ever opened the capsule, medicine capsule? Yes. What do you see inside it? Yeah, some capsules will be in the form of powder, and the other one is, yeah, definitely chemicals will be there. Powder, or sometimes you'll be seeing small colorful balls kind of. Yes or no? Right? That means what? A capsule is a combination of one chemical with another, forming a compound medicine. मतलब एक मेडिसिन के साथ दूसरी जब मेडिसिन ऐड की जाती है तो वो एक अलग तरह की न्यू मेडिसिन फॉर्म हो जाती. कैसा हो रहा है ये चीज? जब आप एक से दूसरे को मिला रहे हो या जोड़ रहे हो, राइट? सिमिलरली इन द सेंटेंसेस आल्सो, when you make this types of sentences, they are being termed as compound sentence. The third one is complex. By the name only you can define them. It's a little difficult kind of sentence where it's difficult to read. मीन्स रीडिंग डिफिकल्टी नहीं होगा, बल्कि सेंटेंस का फ्रेमिंग जो हो ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंड करने के लिए, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कॉम्प्लेक्स. एंड जो फोर्थ कैटेगरी है वो ये जो ऊपर जो है ना, दोनों मिलाकर कंपाउंड प्लस कॉम्प्लेक्स, जब आप मिला दोगे ये दोनों सेंटेंसेस को, जब मिलाया जाएगा तो एक नई कैटेगरी बनेगी जिसका नाम होगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. होप इट इज क्लियर सो फार. Okay, let us have the clarity about each one of them. So, अभी तक आपने देखा कि 4 कैटेगरी है: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. नाउ, व्हाट डज द सिंपल सेंटेंस डिफाइन? सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. अभी इंडिपेंडेंट क्या है, क्लॉज क्या है, दोनों अलग अलग टर्म्स है. Independent India means India is free now from the British government. Yes or no? Similarly, यहाँ पे हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो कोई दूसरी सेंटेंस पर डिपेंडेंट नहीं है. उस तरह के सेंटेंस को आप बोलोगे सिंपल सेंटेंस, जो कि अपने आप में डिफाइंड है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल. ये क्या है? एक सिंपल सा सेंटेंस है. ये किसी और चीज के ऊपर डिपेंड होने की चीज जरूरत नहीं है इसको. फाइन, सिंपल सेंटेंस. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है आपको. आई किक द बॉल मीन्स आपने एक बॉल को किक किया हुआ है, दैट्स इट. इसके ऊपर या फिर इट्स नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन एनी अदर सेंटेंस ऑन टू इट. Now coming to the second category, compound sentence. As I told you, there are two or more clauses that are combined together to form this type of sentence. Am I clear? Yeah, please, students, respond to me. Am I clear to you? The first type, is it clear to you? Simple sentence.
फाइन। अभी हम देखेंगे कंपाउंड। कंपाउंडिंग का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया है, दो से ज्यादा। ठीक है, जब दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलेंगे तो आप एक नया फॉर्म करोगे सेंटेंस, जिसको आप कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, आई किक द बॉल एंड इट हिट टॉम। मैं जो बॉल किक की हूँ उस वो जाकर लगी टॉम को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस। फर्स्ट इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, आई किक्ड द बॉल। और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इट हिट टॉम। ठीक है, ये दो अलग अलग क्लॉजेस है, और इनको ऐड करने के लिए, इनको जोड़ने के लिए हमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पर एंड की शक्ल में है। इज इट क्लियर टू यू? आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लोली by explaining each and every term clearly to you so that you understand the terms. Is compound sentence clear to all? Yes. So, what are we doing here? Compounding means we are combining two different independent clauses, and together with it, we need one coordinate conjunction. From the conjunctions, we are picking here and. And is our conjunction which is helping the two clauses to combine. ठीक है, तो ये दूसरी कैटेगरी का सेंटेंस है। होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होगा ही, प्लस क्या, एक या दो, एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, टॉम क्राइड। टॉम रो रहा है बिकॉज व्हाट, द बॉल हिट हिम। तो यहाँ पे टॉम क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये किसके ऊपर डिपेंड है, बॉल लगी थी टॉम को इसीलिए टॉम रो रहा है। राइट, टॉम रो रहा है बल्कि हम पहले से आपको बता दिए। यस, बट व्हाई ही क्राइड, बिकॉज फ्रॉम द प्रीवियस सेंटेंसेस वी गॉट टू नो दैट द बॉल हैज हिट हिम, दैट्स द रीजन ही इज क्राइंग। यस, am I clear? If not clear also no problem, today you are going to see ample of examples about it. Tom not crying, what did you say, ma? Yeah, I use the crying term in terms of explanation. मैं explanation के लिए crying use की हूँ, लेकिन sentence के लिहाज से वहां पर Tom cried है, जो कि आपका independent clause है। ठीक है, not clear, fine, let me take explain you this again. टॉम क्राइड, ये कौन सा सेंटेंस है आपका, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्लॉज क्या है ये भी हम अपने आगे वाली स्लाइड में समझेंगे। ठीक है, ओके, जस्ट मुझे ये ओवरव्यू देना है, इसके बाद जब आपको क्लॉज समझ में आ जाएगा तब आप इजीली फ्रेम कर सकते हो। टॉम रो रहा है बोलकर एक हमारा सेंटेंस है ये। ठीक है, क्यों रो रहा है वो, बिकॉज उसको एक बॉल हिट की है इसीलिए वो रोने लगा। तो देखो यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, आगे वाला सेंटेंस जो कि आपको ब्लू टर्म में, ब्लू इंक में लिखा हुआ है, दैट इज योर डिपेंडेंट क्लॉज। एंड द टर्म दैट यू आर सीइंग, टॉम क्राइड, इज योर इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। टॉम रो रहा है, बट क्यों रो रहा है, वी नो द रीजन, बॉल हैज हिट हिम। स्टिल नॉट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? कॉम्प्लेक्स समझ नहीं आया, नो प्रॉब्लम डियर, सी वी आर गोइंग टू सी एम्पल ऑफ एग्जांपल्स इन द कमिंग स्लाइड्स. I am sure it won't be clear to you right now because there are two, three terms have come to you in the meanwhile. That is the reason. No worries at all. Let me just finish this fourth category. Then I'm going from the basics of clause and subject and predicate and all. Then it will be everything clear for you. Fine. Let me move on to the fourth category, that is compound complex sentence. तो यहाँ पे क्या होगा, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। मैंने क्या कहा था प्रीवियसली,
जब आप कंपाउंड को और कॉम्प्लेक्स को जोड़ दोगे, ये अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, इनको जब आप जोड़ दोगे तो फोर्थ कैटेगरी जनरेट होगी, दैट इज योर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्लास और सेंटेंस। तो अब यहाँ पे हम जोड़ रहे, देखो आप सेंटेंस के ऊपर ध्यान दीजिए। टॉम क्राइड, ओके, टॉम रो रहा है, ये क्या है, अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज द बॉल हिट हिम, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। आगे आप देख रहे हैं एंड, टू रिमेम्बर, इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू इन द कंपाउंड सेंटेंस वी रिक्वायर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सो दैट इज योर एंड। तो हम देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स को और कंपाउंड को दोनों को जोड़ रहे हैं, तब आपकी चौथी कैटेगरी जनरेट हो रही, राइट। एंड आई अपोलोजाइज्ड इमीडिएटली, क्योंकि वो टॉम रो रहा है, जिसकी वजह से वो बॉल हिट हुई थी टॉम को और वो रो रहा है, इसलिए मैंने उससे माफी मांग ली, ठीक है। अपोलोजाइज्ड हिम इमीडिएटली। आर द फोर कैटेगरीज क्लियर? Okay, now let us see and understand what is a clause. Clause क्या है? Clause हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट इज समथिंग वेयर एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस। एग्जाम्पल के तौर पर एलिस ईट्स मैंगोस, एलिस क्या है, एक नाम है एक पर्सन का। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक हियर सदफ, Sadaf eats mangoes. What I'm talking about whom I'm talking is Sadaf. So Sadaf क्या है यहाँ पर, हमारा सब्जेक्ट है, upon whom we are discussing. Okay, वो क्या कर रही है, she is eating mangoes. Predicate, action word. Predicate is something where we perform some action. तो क्लॉज कैसे बनता है, जब आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों कंबाइन होते हैं तो एक क्लॉज फॉर्म होता। तब से मैं अपनी प्रीवियस स्लाइड में आपसे डिस्कस कर रही थी इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, तो अभी आपको क्लियर हुआ व्हाट इज अ क्लॉज? यस, सो व्हाट इज अ क्लॉज? व्हेन वी कंबाइन अ सब्जेक्ट along with a predicate, a clause is being formed. What is a subject? Subject is something about whom we are discussing. Okay, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो बन जाएगा सब्जेक्ट। नाउ let us understand clearly what are dependent clauses and what are independent clauses. Yes, you're right, Lubna. You have told me what is the definition of clause, that is subject and verb together. Combining them together is forming our clause. Now coming to the differentiation between independent clause and dependent clause. During my explanation, I used this sentence called as independent India. Remember? ठीक है, अभी कुछ देर पहले मैंने ये सेंटेंस यूज किया था। इंडिपेंडेंट इंडिया इज फ्री फ्रॉम ब्रिटिश गवर्निंग बॉडी या फिर गवर्नमेंट। तो इंडिपेंडेंट यानी के वी आर टोटली फ्री ऑफ आवर ओन फ्रीडम, वी हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन ओवर हियर, राइट। तो यहाँ पर हम ऐसे क्लॉजेस को इंडिपेंडेंट कहते हैं जो कि अपने आप में होलसम है, मेन है। फॉर यू फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन हियर। I saw a man crying. Okay, I saw a man and he was crying. He is crying but nobody actions. वो रो रहा था but किसी ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। He is a wise man. He bought a car which was too expensive. I eat some apples in the kitchen. All these are what? Sentences which are independent. यहाँ पे जो भी कंप्लीट आइडिया आपको दिया जा रहा है ये कोई और सेंटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है। ओके, फाइन। Independent clause are those clauses that expresses the complete idea or the thought. Okay, it has a subject and the verb and can stand alone as a sentence. So previously I used the term called as coordinating conjunctions. So
There we used and. So here you can use so many as and, but, yet, so, and so on. Okay. And the next category of clauses are dependent clauses. Dependent यानी कि ये कोई और सेंटेंस के ऊपर डिपेंड हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ ए मैन हु वॉज क्राइंग. आप देखो सेंटेंस के फॉर्मेशन में किस तरह का डिफरेंस है. पहले के सेंटेंस में क्या था? आई सॉ ए मैन ही वॉज क्राइंग. हमने एक पर्सन को देखा है जो रो रहा था. और यहाँ के सेंटेंस में क्या है? आई सॉ ए मैन हु वॉज क्राइंग. मैं एक ऐसे इंसान को देखी हूँ जो कि रो रहा था. See, everything converting or translating to Urdu or Hindi, okay, you won't be getting. See, मैं अभी दो सेंटेंस भी रीड की हूँ और वहां पे हमको यही मीनिंग मिला है कि दोनों रो रहे हैं बोलकर. बट इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में थोड़े से डिफरेंसेस आएंगे. ओके. नेक्स्ट, ही इज क्राइंग बट nobody actions. So we don't have any other formation for it. Next, he bought a car which was too expensive. Here we are seeing he bought a car which was too expensive. तो यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? विच वॉज टू एक्सपेंसिव. ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आपके पहले सेंटेंस के ऊपर. ही बॉट अ कार. वो कार खरीदा तभी जाके उसको उसकी एक्सपेंसिवनेस या फिर उसकी कॉस्टिंग पता चलेगी. राइट और नॉट? And I'll just wait for some time. ओके, लेट मी कंटिन्यू. नो मा, आवाज नहीं आ रही थी बिकॉज आई स्टॉप्ड देयर as Azan was going on. People has reminded me. Fine. Am I audible? Okay, यस अल्हम्दुलिल्लाह. fine. So देखिए यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. She does not like the people who smoke. वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो कि स्मोक करते हैं. हम वहां पे रीजन दे रहे हैं. देखिए यहाँ पे है ना, दोनों में है ना डिपेंडेंस झलक रहा है सेंटेंस के अंदर, कि वो कुछ लोगों को पसंद नहीं करती.
हु स्मोक, स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन किया गया है कि जो स्मोक करते हैं वैसे लोगों को पसंद नहीं किया जाता, बाय सो एंड सो। नेक्स्ट, आई नो द गर्ल हु टुक माई पेन, मुझे वो गर्ल पता है जो मेरा पेन ली है। ओके, आई नो दैट गर्ल। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस में क्या नजर आ रहा है कि बोथ आर डिपेंडेंट, और आपको डिपेंडेंस बताने के लिए अलग से अंडरलाइन किया हुआ है, बॉक्स फॉर्म किया हुआ है। फाइन। आई मेट अ बॉय हु हैड हेल्प मी। ओके, नेक्स्ट, even at this time also, if it is not clear to you, no problem at all. We are having so many examples for you to clear your confusions. Okay, now, so अभी तक आप clause के बारे में समझ रहे थे. So what is a clause? Clauses are of two types. We have seen dependent and independent clauses. A group of words that contain a subject and a verb inside it is called a clause. ठीक है, तो यहाँ पे आप सेंटेंस देखिए, एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने आया हुआ है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इनसाइड इट, जिसमें कंप्लीट सेंस है। आई वेंट टू स्कूल, दैट्स इट, इट्स अ सिंपल सेंटेंस, मैं स्कूल गई हूँ। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? जो कि दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट हुआ हो और अपने आप में वो होल नहीं है। इट हैज टू बी डिपेंडेंट अपॉन समथिंग एल्स। ऑल्दो आई वाजंट फीलिंग वेल, आई वेंट टू स्कूल। फिर भी, मतलब यहाँ पे अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये सेंटेंस कैसा बनेगा? मैं स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। सॉरी, आई वाजंट फीलिंग, आई टोल्ड द रिवर्स वे। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गई थी हालांकि मेरी तबीयत खराब थी। ओके, होप यू आर गेटिंग द क्लैरिटी इन द ट्रांसलेशंस देयर एंड अंडरस्टैंडिंग देम क्लियरली। नाउ, एक दूसरा टर्मिनोलॉजी आ गई आपके सामने जिसको आप फ्रेज कहते हो। ठीक है, क्लॉज अलग है और फ्रेज अलग है। अब डिफरेंसेस बिटवीन देम देख लीजिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ड, सॉरी, सब्जेक्ट वर्ब component is called as a phrase. For example, if you're using it as a best friend, okay, तो यहाँ पे क्या है? Formation of nouns together we are forming. Okay, and you are generating a new phrase called as best friend. or if it is was working, verb phrase है ये, adjective phrase है very pretty, adverb phrase really slowly, prepositional phrase in the bin. Okay, so ये phrases ऐसे हैं जिसमें कुछ मीनिंग छुपा नहीं रहता, जस्ट combination of two terms we are combining and forming a new phrase. For now, please focus on the slides. We will discuss regarding the timings and all at the end of the class. Okay? Fine, fine. I'll come to the conclusion now, because if I stop in the middle, no, won't be useful. That is the reason I was continuing this. So, in today's class, what we have seen about the 4 categories of the sentences with respect to structure, and that is simple, compound, complex, and the fourth one is compound complex sentence. Hope these 4 types are clear to you. And we have seen what is a clause, how it is being formed, and we have seen the clear understanding of what is a dependent clause called as and what is an independent clause called as, and differences between a clause and a phrase we have seen. Okay, so till here I think everyone has got the clarity. If not, in the coming next class, that's on Monday, you will be getting the more clarity about these topic. Before that, before I end up today's class, I want to have some discussions. Okay, first of all, talking about the timings, inshallah on Monday you will be having the class at 3 p.m. and that time if I see the डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई फिर से दोबारा से हमें 5 बजे की टाइमिंग ही रखना होगा। फाइन, नेक्स्ट, और दूसरी चीज, होमवर्क्स एंड असाइनमेंट्स एंड ऑल,
by today or by tomorrow you will be getting to know where you have to submit your homeworks. And in the upcoming classes we will be assigning the work to you for a very short period of time. मतलब मैं अपनी क्लास में भी आपको असाइनमेंट नहीं दूं तो आपको ग्रुप में पता चल जाएगा कि कुछ वर्क असाइन किया हुआ है और आपको वो करना है, ठीक है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स सैटरडेज विल बी द एक्टिविटी डे, क्रिएटिव एक्टिविटी कुछ भी वहाँ पे की जाएगी जिसके लिए आपको रेडी होना है। मतलब एट द मोस्ट आई कैन पिक अप एनी ऑफ द स्टूडेंट फॉर द activity or the assigned task. Fine. I hope you all are following my words. Okay, fine. So today I want to stop over here because we are running short of time. Jazakallahu khairan kasira. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सभी सिस्टर्स को लिंक शेयर की गई है चैट बॉक्स में, आप लोग वहां से जाकर अपनी अटेंडेंस फिल कीजिए। और सिस्टर्स को पर्सनली अब आप स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करेंगे। ये लिंक जो शेयर की गई उसमें जाकर आप लोग रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए। अप्रूवल के बाद आपको एडिट करने के लिए ऑप्शन देगा आपका नेम, तो आप वहां से जाकर अपना नेम टाइप करके डेली मार्क कर सकते हैं इंशाल्लाह अपनी अटेंडेंस। तो अभी आप लोग जो लिंक शेयर की जा रही है वो वाली वहां से जाके रिक्वेस्ट सेंड कीजिए प्लीज। और कल तक या फिर अभी ही आपका अप्रूव किया जाएगा इंशाल्लाह, और उसके बाद आप डेली मार्क कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और होमवर्क का जो भी प्रोसेस है इंशाल्लाह कल तक आप कंफर्म कर दिया जाएगा ग्रुप में। तो किसी को भी पर्सनली आप होमवर्क नहीं शेयर कीजिए, किसी भी एडमिन को इंशाल्लाह। वेट कीजिए इंशाल्लाह, आप लोग करके रखिए अपना होमवर्क। कल तक जैसे ही कंफर्म होता है कहाँ सेंड करना है, किस तरह रहेगा होमवर्क का प्रोसेस, तो आप वहां पर अपना होमवर्क सेंड कीजिएगा इंशाल्लाह। और मंडे से 3 PM होगी इंशाल्लाह आपकी क्लासेस। अगर जो आज है जितने पार्टिसिपेंट्स इंशाल्लाह अगर उससे ज्यादा उस दिन होंगे 3 PM में, तो ही हम डेली 3 PM करेंगे, अदरवाइज फिर से हम 5 पर ही करेंगे इंशाल्लाह। अगर इससे कम स्ट्रेंथ हुई तो इंशाल्लाह 5 PM ही रहेगी इंशाल्लाह क्लासेस आपकी, ओके। आई होप आप लोगों के लिए क्लियर होगा इंशाल्लाह, ओके। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैम, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो इंशाल्लाह कह दीजिए, अदरवाइज एंड क्लास प्लीज।